आज हम पार्टिकल इन 3D बॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है, वो किसी क्यूब में स्थित है और इस क्यूब की भुजाएं एक्स एक्सिस में भी इसकी जो लेंथ है वो ए है, वाई एक्सिस में भी इसकी लेंथ ए है और जेड एक्सिस में भी इसकी लेंथ ए है। तो लेंथ ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू ए फॉर ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल्स टू side into side into side is equals to a cube. The potential energy V vary B. The potential energy V may be put equal to 0 within the box at the boundary of the box and in the remainder of space outside the box we assume V is equals to infinity. We choose the Cartesian coordinates system with the length at 1, coordinate system with the origin at one corner of the box and the x, y, z axis along the edges of the length A. The potential energy is then when particle inside the box, then potential energy in the x direction Vx is equals to 0 and Vx is equals to infinity. It means its value will be in between the 0 to V infinity at boundary or outside. Then potential energy in the box in the length of box A is equals to 0 is greater than 0 is less than x and x is the less than A. It means A is the length of particle. When the y axis we choose, then potential energy Vy is equals to 0 and Vy is equals to infinity outside the boundary, and the value of y is in between 0 to a. Same we can say for the Vx is equals to 0 to Vz is equals to 0 to Vz is equals to infinity, and z is in between 0 to a. Now the Schrodinger equation within the box is given by del square psi upon del x square plus del square psi upon del y square plus del square psi upon del z square plus 8 pi square m upon h square e psi is equals to 0. Wave function psi is written as psi is equals to x y z equals to function of x into fy into fz. This is the equation number 2. Therefore the left hand side of equation 1, and we put the value of equation 2 in the equation 1. Del square psi upon del x square can be written as equal to the fy fz or del square fx upon del x square. Similar, del square psi upon del y square is equals to fx into fz into del square fy upon del y square, and the third part in z axis, del square psi upon del z square can be written as fx into fy del square fz upon del z square. This is the equation number 3rd. Now we put the value of equation 3rd in equation 1 and dividing the 8 pi square m e upon h square fx, fy and fz. Then we got the equation number given below: h square upon 8 pi square me 1 upon fx del square fx upon del x square plus h square
8 pi square me 1 upon fy del square fy upon del y square plus h square upon 8 pi square me del स्क्वायर एफ एक्स एफ जेड अपॉन 1 अपॉन जो भी हम लिख देंगे इसको एफ जेड है तो हम इसको एफ जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर लिखेंगे इसको प्लस ई इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। साइन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें सिर्फ एनर्जी मिलेगी और इक्वल्स टू 0. First term is the function of x only and the independent by y and z. In the first part we can see only x axis are there at 3 positions. X axis are there in the first part. So the first term is function of x only and independent of y and z. हम for the second y and z are the similar like this. The fourth part is energy E, that is constant. If y and z are kept constant and x varies, the second, third and fourth terms remain constant. Then, or we can say therefore first term must remain constant. Then we can written as in the x form माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m 1 अपॉन एफ एक्स डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको हम e को दूसरी तरफ लाएंगे, एक्स एक्सिस के रूप में लिखेंगे, देन इट विल बिकम ई एक्स इधर जाने पे ये माइनस होता तो माइनस हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हम केवल फर्स्ट पार्ट को ई एक्स के इक्वल हम कर देंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट को हम माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m 1 अपॉन एफ वाई इंटू डेल स्क्वायर एफ वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई वाई, और इसी तरह से थर्ड पार्ट को भी हम लिख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि टोटल एनर्जी ई इज़ द सम ऑफ ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। इफ़ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन वी गेट एफ एक्स इक्वल्स टू √2a अपॉन √2a साइन n पाई x अपॉन a, and the ex value is nx square h square upon 8 ma square. We can write also for the ey and fy, and similar can be written as for fz and ez. So when we get the value of sine, we know the sine is the function of x, y and z. Then we get the total energy is the sum of Ex, Ey and Ez, which is equal to nx square plus ny square plus nz square इंटू ब्रैकेट बंद कर दीजिए और उसके बाद एच स्क्वायर अपॉन 8 me a square, where the nx, ny and nz is equals to 1, 2, 3, 4 and so on. The occurrence of three quantum numbers, characteristics of three-dimensional problem in wave mechanics. The 0 point energy is 3 times that for one-dimensional box. Since each state is characterized by 3 quantum numbers, it is possible to contrast several excited states of same energy. For example, there are 3 independent states having the quantum numbers 2, 1, 1, 1, 2, 1 and 1, 1, 2 for nx, ny and nz. ठीक है, all these states have the same energy, that is when we get the total of these 6h square upon 8 ma square. Now see the graph in the right hand side of this degeneration of few states, 0 point energy at n is equals to when 0, then we get the value is 0 and that is known as 0 point energy.
if we get the value of nx is equal to 1, ny is equal to 1 and nz is equal to 1, then we get the total 1 square plus 1 square plus 1 square. It is total 3 h square upon 8 me a square. Now there are 3 states for 2 1 1 system. It may be 2 1 1, it may be 1 2 1, it may be 1 1 2. When we put the value of nx, ny, nz in the formula, then we get the value 6 h square upon 8 me a